So, hey guys, welcome Okay. back to Round the Clock. I am your host, Jainam Turakia, and today we are diving into a conversation on a very beautiful genre breaking film. But before we begin, let me introduce you to a little about what Round the Clock is. So it's an initiative by Reborn India Film that celebrates indie cinema by bringing you some of the most unique films to our screens all around. And today, we have this film called Radio Ghaint, a very heartwarming comedy drama that will be screening as a part of our program. I'm thrilled to be joined by the amazing director of the film, Mr. Indrajit Natoji. Then we have Vijay Chaurasaji and Mohitji, who are the producers on the film, and the very talented cast of the film, including Ms. Soumya Tandon ji, Ms. Leena Sharma ji, Mr. Rajendra Bhatia ji, and Mr. Dharmendra Thakur. Plus, we have our festival director, Mr. Rahul Agarwal, who will share his insight on curating this amazing film for the festival. So let's begin. My first question is like the most important one I feel I should be asking that how many people did it take you guys to convince to mention the correct pronunciation of Kent in the film? Because I've seen the description as well, and the film makes the film and the entire marketing process makes it very specific to mention that it is not Ghent, it's Kent. Even in the film, Somaji mentions it quite a few times. Okay, okay, Kent, Kent, whatever. So how did that came into picture? तो मैंने तो पहले ही गलती कर दी थी और Hmm. क्योंकि मेरे कैरेक्टर को गलती करना अलाउड था तो मैं तो बच गई And also Amrita का वो strategy भी था. You know, हाँ I'm too dismissive big for everything. You know, for yeah the radio channel, for Luvdhiana. I know I'm world famous. I'm very dismissive. I don't really care. It doesn't matter pronunciation गया तेल लेने Yeah. आज के जनरेशन के ओम कपूर from like Om Shanti Om. Yeah, okay. So it actually came from the writer Pawan Soni, and he I wasn't very I had heard this term can't, but he put it in the in one dialogue. You know, and he was trying to figure out characters, and we were trying to figure out the entire play. And he had used this word, so I picked it up and I put it as a radio channel only. And apparently it is it's very idiomatic voice मतलब word मतलब वो चालू भाटिया जी मैं सॉरी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ जी जी ये कोई बात नहीं नहीं एक समझ में आ रहा है मुझे स्लैंग वर्ड है ना Hmm. एकदम झक्कास लाइक इट्स लाइक झकास हाँ बॉम्बे में जैसे बोलते हैं ना ओ झकास तो वैसे हाँ कैंट है am I right yeah right yeah so हाँ इसमें it's ना मैं कुछ कहना चाह रहा very हूँ local very local जी very हाँ local हाँ इसमें ना जैसे हमारा जो हिंदी की जो वर्णमाला है तो वो कै खे गै घै आता है उसमें तो ये जो वर्ड है ना कैट ये इनमें से कोई भी नहीं है लेकिन है ये उसी में से जो कै खे गै और घै ना ये घै है और ना गै है उस दोनों के बीच का वर्ड है कैट हाँ तो और कैट इसीलिए रेडियो इसीलिए कैट हाँ, और इसीलिए आप जब फिल्म देखेंगे आप लोग सब जब फिल्म देखेंगे टाइटल में हम लोग वही कंफ्यूजन को फिल्म टाइटल में किया है एक बार क से हाँ मैंने हाँ बड़ा लिखा है और घ से मैंने लिखा है तो वो उसको टर्न हो जाता है घ से टर्न हो जाता है Can. हाँ यस यस मेरा ये सवाल है when as a writer like you have made it into 15-minute film but it takes a actor's arc as well as the story arc to complete that but in a short span when you came to know even the actors जब आप लोग को पता चला कि ये 50 मिनट की फिल्म है प्लस इसमें हमारे इमोशंस इतने सारे हैं प्लस उस इमोशन को आर्क कैसे देना है इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में एंड यू एज अ राइटर डायरेक्टर हाउ इट वाज मींस यू कि नहीं मुझे ये शॉर्ट्स ही चाहिए जब एक्टर्स का इतने इमोशन आर्क हो रहे हैं ये मुझे इतना ही आर्क चाहिए हाउ डिड यू मैनेज विद दैट थिंग्स so actually we had so much fun in the workshop with Leena actually ji yes and Soumya ji and everybody and that is where सबका बैक स्टोरी हम लोग मतलब सेट किया
like Dharmendra's character and Bhattaji's character, everybody's character, उनका क्या जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है. लाइक द रेडियो स्टेशन का जो ओनर है, उसको उसका डिवोर्स चल रहा है और वो ऑफिस में ही बैठा है, वो घर नहीं गया है. तो इसीलिए इन द फिल्म वो घर नहीं जाता, वो वहीं पे सो जाता है एंड कीप्स ड्रिंकिंग देयर. एंड धर्मेंद्र इज वो सैलरी डायरेक्टर, वो भी फ्रस्ट्रेटेड है, वो भी कुछ अपना आर्टिस्ट्री कुछ करना चाहता है. तो सबका अमृता कहाँ से है? अमृता है का जो बैक स्टोरी है, वो बॉम्बे गई और वहां पे सक्सेस नहीं मिला, वापस आई और उसीलिए उसका और वो अपना सैलून, शी इज एंटरप्राइजिंग पर्सन, मतलब वो शी गॉट अ गुड बिजनेस माइंड and she is not a loser, but because she has not been successful in something, she has come back home and she set up something, but she still has the angst of being the superstar. So ये इन सबका जो कैरेक्टर्स है, हम लोग बैठ के सबका बैक स्टोरीज, सबका जो अपना स्टोरीज है वो क्रिएट किया पहले. देन ये जो मोमेंट है, ये जो 50 मिनट का जो मोमेंट, तो विंडो है जहां सब कैरेक्टर्स आते हैं, उनका बैक स्टोरीज का ग्राफ वहीं से आता है. मतलब स्टोरी, ये जो पूरा फिल्म का जो आर्क्स है, वही बैक स्टोरी से ही आता है. बट आई थिंक सौम्या, धर्मेंद्र कैन एलाबोरेट ऑन दैट एंड भाटिया जी. तो आप लोगों का क्या कॉल है, हाउ वाज इट कि आप इमोशन को कितने लेवल तक लेके जाएं कि वो फ्रेम के अंदर आप दोनों तरह के इमोशंस अपने दिखा सके, लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग वाला एंड एंड वाला. सो वो कैसे आप लोग ने मैनेज किया? The main thing is that, acha, yeah, Dharmendra can okay. And Leena's character is very interesting. Like she is Yeah. a housewife who is trying to get her husband back. So आप बोलिए अपना कैरेक्टर का, पर ज्यादा Yeah. भी मत बोलिए क्योंकि फिल्म में देखना है. Don't reveal too much. Yeah. The thing is that the real and the real, there's not much difference, you know. Here, in my character as a Gulwinder, what she's showing that don't underestimate a housewife. If she's a housewife, she plays very 100%. She plays housewife. But when she is, not given a respected or not given an importance, so then the thing comes जहाँ पे फिर वो अपना वो दिखाती है. Like the Gulwinder has played a very important role that I was a housewife, but now you have not given importance. Now I'm doing it. Sorry, Gulwinder is a twist. आप इससे ज्यादा मत बोलिए. Gulwinder का ही twist है, बस हो गया. It's a conclusion. Yeah. ठीक है, हम ना इसको एडिटिंग के टाइम पे ऐसे बीप्स डाल देंगे कि स्पॉइलर. Spoiler alert. Even लीना जी, आपका कैरेक्टर इज लाइक रियली एन अमेजिंग कैरेक्टर इन द फिल्म. Thank you बट so much. आई नो वो राइटर, शी पोर्ट्रेज अ राइटर, राइट? सो उसमें क्या होता है ना कि व्हाइल द फिल्म्स गोइंग ऑन, एंड दिस इज नॉट अ स्पॉइलर, लाइक आई एम श्योर मार्केटिंग पर्पसेस में होगा ही है कि द फिल्म जो उन्होंने लिखा था एंड जो हो रहा है, दोज आर बोथ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स. So when it comes to like as a writer, when you get into your character, would your character, like after the events of the film, would your character have wanted के no, जो मैंने लिखा था वो कोई ना कोई फॉर्म में एग्जीक्यूट हो, और would she be happy कि okay जो हुआ that is all, I do not want my version of the story to be out ever? That was a tricky thing actually. What I wanted, but it doesn't happen actually. It came up something else. So it became a comedy actually. Yeah, actually, and I even like how there is this one instance where you join in the drama itself, and you play this one character. Like I would not name it for spoiler purposes, but I even like that inclusion. You know, it was a complete shift in the story. Emotion एक side पे जा रहा है, and then the trajectory entirely changes when that character is introduced. So, ये improvisation, like was it always a part of the script, or was it you thought कि okay, no, when this character, like when your character enters into the play, तभी ये improvise होना चाहिए? I think improvise hua, because I think I'll give credit to our director, because he has actually given us a very good instructions
very good. He has managed everything. So the story was going here, but the twist was there. So even I didn't realize it, and the way he directed very well, actually. So I'll give credit to him. So what we did was a lot of the entire plot we actually didn't share with everybody. So because everybody had, I think only Soumya had kind of knew, because she had to hold the film together as a character, what is happening. But the intent nobody knew. Meaning, कौन किसका क्या, कहाँ पे twist आएगा, कैसा आएगा, and all this was in my mind. And when you actually put it together in the edit, what happened was that whole workshop, where we actually improvised. So it was a organized chaos that we created on shoot, because shoot में भी हमारा बहुत tight था. We had we had budget constraints, we had time constraints, we had many issues, which happens in every production. So, but what was nice is all the actors came very clear about who they are, number one, what they are supposed to do at that point in time, and to what level of improvisation they can do and cannot do. So when that kind of preparation happens, and there is improvisation within that grid of performance, magic happens. And I think everybody is really, I mean, I was amazed at some of the, I forgot to say cut many times, because they were just going on. Until I say cut, they'll carry on. They are all veteran actors. They will, until the director says cut, हम लोगों को आगे बढ़ना है. मतलब they won't, अरे क्या हो रहा है? So many times I forgot to say cut, and many of the extra things that they have added, I included in the film. Because, like for example, Soumya had to keep talking, and then she must have run out of the dialogue that was given to her, but she kept improvising, and that was the magic. That was the texture during the shoot. It was mind blowing. It was actually a difficult shoot. So many characters, and everybody was on sync, on time, and we were shooting till 3-4 o'clock in the night, and everybody was tired. There was no break. But fantastic, and thank you. How long did this shoot take? Teamwork was very How good, long did and this we shoot take? were really enjoying it, actually. The shoot Behind the was, scenes also and on the scene also. shoot was 5 days. 5 days, yeah? 5 days or 6 days? 5 days. Yeah. I think. Yeah. 5 days. So, as an actor, that's- means how did you get the character? Means how, did you absorb any characters? कि like सोम्या जी ने पहले भी ये roles ऐसे किए हुए हैं कि इन भाभी जी घर पे कि वो एक ग्रूमिंग टीचर रही हैं. सो वो एसेंशियल्स प्लस आपका जैसे था एक प्रोड्यूसर का कैरेक्टर, आपका डायरेक्टर का, आपका राइटर, हाउसवाइफ का. तो आप लोग ने वो कैरेक्टर को कैसे अब्जॉर्व किया, किसी को देख के या खुद से मन में बैठाया? सो हाउ वाज दैट प्रोसेस? मैं जल्दी से अपना बता देती हूँ. मुझे सबसे ज्यादा जब हम डायरेक्टर ने जब हमें मतलब मुझे जब समझाया, तो मुझे इतनी क्लैरिटी थी उस कैरेक्टर की कि ये कैरेक्टर जो है ये बेचारी करना चाहती है जिंदगी में बहुत कुछ, दिल की बुरी नहीं है, लेकिन जिंदगी में वो नहीं कर पाई जो मुकाम वो जो उसको लगता है कि उसको मिलना चाहिए था. और ये हमारी इंडस्ट्री का एक ऐसा इमोशन है ना, जो आप अगर हर पत्थर मारेंगे तो आधे से ज्यादा लोगों का यही इमोशन है कि जो वो करना चाहते हैं, जिस मुकाम पे वो पहुंचना चाहते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाते. और चूंकि हम सब अपनी एक दिखावे वाली इंडस्ट्री में रहते हैं, तो हमें एक फसाड बनाना पड़ता है अपना. हम बनाते हैं कि हमने बहुत कुछ किया, स्पेशली जब हम अपने छोटे शहर या अपने टाउन में वापस जाते हैं, तो हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि हम वो नहीं कर पाए जो हम करने निकले थे. तो वो जो एक वो जज्बा है, इट इज सच अ रियल कैरेक्टर, इट इज सच अ रियल इमोशन विच यू हैव एक्सपीरियंस्ड एंड विच यू हैव सीन. तो वो जो मुझे जज्बा और वो कैरेक्टर जब बताया गया, तो मुझे लगा ये तो कितना खूबसूरत कैरेक्टर है और कितना रियल है. तो मुझे ना उस कैरेक्टर की पकड़ तब से हो
I had complete clarity of this character and I was explained so well. इतना खूबसूरती से डायरेक्टर साहब ने ये मतलब इंद्रजीत ने मुझे समझाया था. और सबसे अच्छी बात है कि ये सिर्फ एक कहानी या कॉमेडी नहीं है. फॉर मी इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द इंडस्ट्री दैट वी ऑल वर्क इन. हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें ऐसे ही होता है. कभी कभी चीजें बनते बनते हिट हो जाती हैं और हर बंदा अपनी अपनी स्ट्रगल से आ रहा है. प्रोड्यूसर की अपनी स्ट्रगल है, डायरेक्टर की अपनी स्ट्रगल है, राइटर का अपना एजेंडा है, जो हीरोइन है उसका अपना एजेंडा है, जो हीरो है उसका अपना एजेंडा. सब अपने एजेंडे लेकर आए और सब अपने अपनी अपनी जगह सब ना खुश हैं, जो कि अक्सर होता है. लेकिन फिर भी हमारी कलेक्टिवली क्रिएटिवली हम जो कर जाते हैं कभी कभी वो हिट हो जाता है. सो इट वाज सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडस्ट्री आल्सो दैट वी वर्क इन. आई वाज टोटली सोल्ड फ्रॉम द डे वन. The one character which is played by Dharmender ji, which was actually a difficult character. His character represented my fears as a director of losing control. Right, Dharmender ji? आप बताइए कुछ. हाँ हाँ, नहीं मुझे भी फर्स्टली जैसे ऑडिशन था तो उसमें इतना क्लियर नहीं हुआ, बट ये है कि जब वर्कशॉप हमारी हुई तो धीरे 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 वो क्लियर होती गई चीजें. तो जैसे 3 या 4 दिन की मेरे ख्याल वर्कशॉप लगी थी हमारी मड में, तो उसके बाद सब कुछ क्लियर होता गया कैरेक्टर के बारे में और मतलब इजी होती गई चीजें. जैसे हम सेट पे गए, सेट पे फिर उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आई जो कैरेक्टर के बारे में मतलब अच्छा था. And मैं धर्मेंद्र जी को ना कंफ्यूज रखना चाहता था क्योंकि वो कैरेक्टर कंफ्यूज है. एंड इट वर्कड क्योंकि काफी सारे मैं उनको भी थोड़ा सा मतलब उनके साथ I wanted to work, but I wanted to not reveal completely exactly what I want. So that confusion has come out beautifully, and of a director losing control of his work. It's mind blowing. So I'm saying कि ये फिल्म ना वो स्ट्रगल शोकेस कर रहा है. As Soumya ji mentioned कि ये this film is showcasing the struggles that everybody in the industry is going through at some point of time. Like अभी वो प्रोड्यूसर का भी हमने like सी के अभी वो in the end while Rajendra ji is sleeping. So तभी when he wakes up, he's like अरे यार मेरा बंद हो गया अभी ना, ये बंद हो गया, रेडियो बंद हो गया, so I'll have to do this. And we see it from a director कि यार director की कोई सुनता ही नहीं है. And then director gets a call, okay, he'll directly jump. And actors के point of view से भी like कि अभी हमें कुछ तो करना है. And that was an important conversation, कि ये तेरा ही है. This is just that one show you have. तुझे जो करना है, you just do it in that one show. And everybody is improvising. जो beatboxing के लिए भी जो आए थे, they are also improvising. Everybody is trying to put in. तो एक struggle होता है कि everybody is that जो face कर रहा है. And every one of you guys have been in the industry अलग अलग जगह से. Like, and you guys are at different stages also. Okay, you have been in the industry for a few years, for a long time. Like even Indrajit ji is I think for more than 2 decades. So आपका struggles क्या रहा है? Because I think as important as the film points out कि जो struggles हो रहा है and it throws a commentary. I think audiences will also love के जो अपना personal struggles होता है, how they are like they would connect with that. आपका struggles क्या रहा है? You're asking me or Everybody. This is for मेरे everybody. ख्याल से बाकी जो एक्टर्स नहीं बिल्कुल बोल पाए, लेट्स स्टार्ट विद देम. Yeah. So राजेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, लीना जी, बताइए your perspective of the industry. मैं हाँ जी मैं नहीं धर्मेंद्र प्लीज. नहीं you start. I'll say after that. श्योर, पक्का. हाँ जी. मैं मैम बेसिकली जो है 2018 से मुंबई में हूँ. तो इसमें क्या है कि मेरा पेंटिंग बैकग्राउंड रहा है, तो मेरे लिए जो ये प्रोजेक्ट स्पेशली रेडियो घंटे तो एक तरह से पहला प्रोजेक्ट है जिसमें मतलब बहुत कुछ लर्न करने को मिला. तो 18 से लेकर 22 तक का एक्सपीरियंस ऐसी है कि मतलब चल रहा है. तो अभी एक सीरियल शूट कर रहा हूँ, तो ये तो चलता ही रहेगा. मीरा जी. हाँ जी. So मेरा बैकग्राउंड जो है I came from my whole family is from Indian Army. So it is a 40 to 45 years मतलब we have seen Indian Army. So it suddenly like it was a change for us. So मुंबई में हमें 5 years हो गए and with the God's grace 5 years में I did 5 short films, 12 web series and 6 films.
And recently, my one web series is releasing on Jio Cinema, streaming on Jio Cinema, 10 June ki Raat. So I did main character, Tushar Kapoor's mother in that. So the journey was very good, but Ekta Kapoor has given me a very good platform to show my talent, and I'm very thankful to her. So, and next, the Skyforce, the next theatre film is coming. So, upcoming projects are there lined up. राजेंद्र जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं मुझे लगभग 40 साल से ज्यादा हो गए हैं इंडस्ट्री में। तो मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर शुरू किया था, असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर राइटर, फिर डायरेक्टर। ये सिलसिला मेरा चल रहा है कई मतलब कंटिन्यूस। लेकिन 2009 के बाद मैंने एक्टिंग में एंटर किया था। तो 2009 से आज तक काफी सारे सीरियल्स, कुछ फिल्म्स हैं, जिनमें से मेन एक ये ड्रीम गर्ल 2 में भी मैंने किया था। अभी मेरे जियो सिनेमा पे भी 2 वेब सीरीज है, एक रणनीति है, एक गांठ है, गांठ चैप्टर 1 के नाम से, जो बुराड़ी कांड दिल्ली में हुआ था उसके ऊपर बेस है। उसमें भी मेरा अच्छा कैरेक्टर है, और रेडियो कैंट में तो है ही है। और इसके साथ साथ मेरा भी एक माइंड ब्लोइंग कैरेक्टर है। कैरेक्टर है। And what is अभी nice मेरा about सीरियल चल रहा है जी पंजाबी के ऊपर। what is nice about them, the actors, is that I wanted a very rooted lingo, when the dialogue and the nuances, and they helped me rewrite the entire thing in Punjabi and then took out the Punjabi. So it's a very good balance of Hindi and Punjabi, which even if you don't know Punjabi, you can understand. And that was a very nice balance that all the actors helped me create. इंद्रजीत जी, so how you means आपका casting process कैसा रहा था कि for this role I need this, for this role I need this, so what was that to get? Yeah, and how did you meet, how did you end up meeting everyone who are in the cast right now? So Kunal Shah, he's a veteran casting director and he's a very close friend also. So he had done my casting for Afatesh, which was my last release in OTT, Z5, which is Neha Sharma and Deepak Dobriyal, and Amit Sial. So we got very close there, and he also was part of this project, and he did magic with. And my brief was, of course, we already have. So Soumya is a dear friend, so she was already invested in the project. She was already on board, but I wanted fresh theatre actors who are completely like the character in a film. They're not over exposed, or they're not people haven't seen them so much on screen. At the same time, they are veteran actors. So that was my brief. So I went through a lot of cast, and they all gave us the auditions of their parts, and then after that there was a workshop. So workshop was where we locked everything. So Kunal Shah, the casting was brilliantly done by Kunal Shah. I agree. I second that. Yeah. So, has there been ever been a moment in all your lives कि जब भी आपने this is for the actors कि जब भी आपने बोला कि यार अभी जाने दो, इतना मैं सोचना ही नहीं है, because अभी मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूंगा, even in the film that's happening. So has there ever been a moment of like that in your lives? Exactly, this is Radio Ghaint is that only. बहुत हो गया, Yeah. अभी मेरा फिल्म बनाऊंगा, हो गया बहुत हो गया, अभी कैंट फिल्म बनाऊंगा बस। तो यही हुआ ऐसे आपने कभी कैंट फिल्म बनाई है? ऐसे फॉर द एक्टर्स आपने ऐसे कभी कैंट सिचुएशन किया है अपने लिए लाइफ में? वो तो as a director, especially when you're working with big studio, I work with Z Studios, I work with UTV. It's always a fight. It's a constant fight to keep your vision intact. Matlab, there are so many, especially when you are working with bigger studios, the bigger budgets, and it's not your film, your project, not film.
it's my film in the end of the day, but it's not your project. And there are so many inputs coming from so many, ऐसा करो, ऐसा होना चाहिए, just what Soumya was mentioning, So, but keeping yourself, your vision there is a huge, huge fight. So वो मैं बोला बहुत हो गया, अभी मेरा मैं खुद करूंगा. तो कर दिया हम No, लोग that सब एकदम. that brings me to the producers as well, because producing is a very very challenging task. And since both of you producers, Mohit ji and Jay ji, both of you have different titles, and I see there are a lot of producers in the film. What exactly do different producers do on the film? Like, how much input do they give, or do they only invest like input financially, or do they have a control on the narrative? What's your take on that? See, if you talk Vijay, about you me, go first. yeah. If you talk about me, as I said before, it's just 100%. It's just Indrajit Natuji, and so I just blindly believe in them, and whatever they do, I said, okay, it's bang on into this. Nothing much, because I know कुछ तो अच्छा बनने वाला है. कुछ ऐसा नहीं कि nothing like that कि you know scripted. And you see, I basically come from an advertising producing, as Indrajit says that when you invest with a huge money, you always stick to whatever is being scripted. You have to follow that. The same with me also, when I am doing some other project. Recently I have also worked with Soumya, and there I said कि सौम्या जी यही है, हाँ, इसके इसके आगे नहीं जाना है, इसके पीछे नहीं जाना है. So that same, like, you don't get that freedom, but here is everybody getting a freedom, and they worked on this freedom. So that basis, so it's just, when you do any project, it's always that whom we are working with, who is the director, who is the cast. That's more important. And the story. Most, as I mentioned before and now again, that it's not a 2 hours or 3 hours. It's if you can tell your story within a small time frame, that's much better. So I think And that's the way I thought of taking my stake to being this part of this project. And we all are into today, we are verge of final and on releasing releasing way we are on going ahead with. So that's from my part. So with great freedom and independence comes great responsibility, which is the scariest actually. In Yes. fact, I was more nervous for this project rather than the project with the studio, because there I have 100 people to blame. अरे studio ने ऐसा नहीं करने दिया, ऐसा कर दिया ना, and the onus is on them to make the film work or not. And I mean, of course, the onus is on the director also. But I mean, I have a lot of people to fall back on. Here, no, it's everybody is believing in my vision. Like Vijay said, he hasn't even read the script, and he said Indrajit कर देगा. मतलब वो सबसे बड़ा pressure है हमारे मेरे ऊपर. I better make a good film, man, and I hope it's a good film. So कभी मुझे I wake up in the 100%. No, morning like, it's a very good film, Indrajit. I don't think there's any doubt. It was yeah, a wonderful idea, and I think having worked with studios, done all the so-called large budget things, I think it's also about being out, going back to your roots here, of saying, yeah. what is good old storytelling all about. I think the focus with this film is on that. सारे एक्टर्स ने अपने क्रिएटिव इनपुट्स दिए हैं, और सी स्ट्रगल बहुत रियल होता है. हमें लगता है कि डायरेक्टर कंट्रोल में है, जैसे इंद्रजीत कह रहे थे, बट हर बार एक्टर जो होता है वो एक एनर्जी लेकर आता है सेट पे. वो एनर्जी को कैसे आप चैनलाइज कर सकते हैं? कंट्रोल तो कोई भी नहीं कर सकता किसी की एनर्जी को. और खास करके ऐसे प्रोजेक्ट में, जैसे इंद्रजीत ने कहा कि सौम्या जी ने इम्प्रोव किया, वो कट नहीं बोला तो वो बोलते गए, आगे करते गए, और बहुत सारी चीजें थी जो बहुत ही स्पॉन्टेनियस हैं इस फिल्म में, राइट. एंड आई रियली फील कि ये एक डिसरप्शन क्रिएट करेगा. व्हेन इट्स आउट देयर, ऑडियंस विल स्पीक, एंड दैट्स वेयर
I think the struggle is, as a producer, one of my real challenges is, जैसे मैं राहुल को बोल रहा था कि yes, the struggle is real. There is a lot of responsibility. All the actors, Indrajit has got this faith in the film, and we have to now make sure that how do we convince the theaters and the exhibition sector really to give this film a chance so that audiences can come in and help our film get the, I would say, visibility that it deserves. Because this kind of storytelling, मेरी शक्ल नहीं आ रही। to my mind, is going to be the future. Yeah. Yeah. Well said. Right. Right. So my final question would be for Soumya ji. नेटवर्क तो Soumya गया ji, क्या? Soumya ji, what do you think like the audiences will like audiences should take away from the film once they have So, seen? ऑडियंस के लिए टेक अवे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जब अपनी, मतलब ये मेरे लिए पर्सनली, जो मेरे लिए जो टेक अवे था वो ये था, जो मैंने पहले बताया कि हम इंडस्ट्री में काम करते हैं, हमारा जो फिल्म मेकिंग का पूरा प्रोसेस है वो टीम वर्क होता है, लेकिन हम सब अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशंस और अपने अपने एजेंडे के साथ आते हैं, और कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंटली तो कोई बनाता नहीं है। ऐसा नहीं है कि राइटर फिल्म बनाता है या डायरेक्टर फिल्म बनाता है या एक्टर फिल्म बनाता है, ये हमेशा ही एक कोलैबोरेटिव और टीम एफर्ट या टीम वर्क होता है। और हम अपनी, मतलब इट इज ऑल्सो लाइक अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ की we all come with our agendas and we all work in teams, we all feel that हमको ऐसा लगता है कि हम ही शिप चला रहे हैं, हमको लगता है हम ही अपने लाइफ के हम खुद ही हीरो या किरदार होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वी आर अ पार्ट ऑफ अ लार्जर स्कीम, अ लार्जर सिस्टम, अ लार्जर स्टोरी। सो एंड दैट इज द होल, ये एक, दैट्स द कॉमेडी ऑफ लाइफ, that we feel we are in control of our life and we will drive the narrative of our life, but it never happens and never works out like that. All हम right, सबकी guys. लाइफ में हम खुद हीरो हैं, लेकिन हम एक्चुअली अपनी लाइफ के भी हीरो नहीं हैं। हमें खुद ही नहीं पता नाव किधर जा रही है, शिप किधर जा रही है, nobody knows the plan of the world। और ये सब रायता फैल रहा है, ये सब चिड़ी पकी और हिट भी हो गया। तो किसी प्रोजेक्ट का कभी कभी हिट होना, नहीं होना, चलना ना चलना किसी के हाथ में ही नहीं होता। It just sometimes it's just all very random. It's just life. You just flowing with it. Maybe that's why people say. Maybe that's why people say that whenever we are doing something or just existing, just we have to stop thinking about other people and we have to start just seeing ourselves. Like हमें main character energy maintain करनी है, बाकी ठीक है, दुनिया चलती रहेगी। I think that would be the biggest takeaway. And that's exactly the essence of the film, Radio Ghaint. Life is Ghaint, basically. And life is like this is a Punjabi version of Life is Beautiful. Yes. Yeah. Don't take anything or everything or yourself also that seriously. Yeah, that's the whole essence of this film and all of us, and that's the philosophy of this film, actually. All right. So I am glad that we had this conversation, and I'm waiting for the audiences to react to this and react to this new form that has been brought up, because this form is like, I think it's a pioneering start of having 50 to 1 hour films as a part of series, and rather than being it on OTT, they are actually being part of something that can be screened. And right now, considering how audiences are and their attention spans are, I think they would very much appreciate if more people join in with this format and try to tell their stories in the least amount of time. I think that is also what advertising is something about. कि like जितना तुम कम में कर सको. So I'm very much excited for the audiences to react to the film, and I cannot wait, for the 19th of November, since that's when the film is screening with Riff. So all the best, guys. It was great talking to you, and I hope to see you soon. Thank you so much. Thank you so much for Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Thank you, Reborn, for supporting our project, and there's really, really, really
Hats off to you guys. I really loved the Wonderful. film, yaar. I saw it in the middle of the night, and I was like very much surprised ke how amazing this film was. And like at my entire like workload, I was tired, and I'm like, let's watch a film, and and this film is it's commenting something, and at the same time, it's also giving me the satisfaction of watching a film. Like even if I turn my brains off, I'm still getting the concept. I'm still enjoying this. There's entertainment. Everything is there. So yeah, I'm actually glad that this happened. Like it's an amazing film. I can't wait Thank for the you. audiences to react to it. And Thank you Thank so you. much. मेरी Thank you. मेरी Thank you. Speak. हाँ मेरी and मेरी भी ना एक विश है। हाँ जी हाँ जी, बताइए। जी भाटिया जी। मेरी एक अभी अभी ना मैंने एक ऐड की है नेटफ्लिक्स की दिवाली दिवाली की ग्रीटिंग्स की, तो उसके ना 93 मिलियन व्यूज हो गए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि रेडियो कैंट के इस रिकॉर्ड को तोड़े रेडियो कैंट। Oh, मेरी ये wow. विश है I wish कि that. I हमारी wish that. फिल्म इस रिकॉर्ड को तोड़े। पर अभी रेडियो कैंट अभी यूट्यूब पे नहीं आएगा, बड़े पर्दे में आएंगे भाई। तो अभी तो 1 तारीख को आपकी रेडियो गाइड की स्क्रीनिंग है। हाँ भी तो स्क्रीनिंग है, लेकिन जब भी ओटीटी पे आए या जब भी आए तो वो सारी रिकॉर्ड तोड़े। जी हमारी ये जरूर विश है। जी जरूर। आपके मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर थैंक यू। चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, सब कुछ। और या तंदूरी चिकन, विस्की, तंदूरी घी शक्कर without calories. That's how we're going to tell. ओके थैंक चलो यू सारी गाइस टीम को शुभकामनाएं। Thank you. Thank you so much. Thank you so Thank much. you. Thank Thank you so much, guys. Thank you so much. Lovely talking to everybody. And lovely seeing Thank you you, all thank again. Bye. Thank you. Thank Feeling- you. feeling To that radio. Thank you so much.